क्या आप स्पेन में जाकर स्टडी या वर्क करना चाहते हैं? Are you planning to work or study in Spain? ¿Piensas estudiar o trabajar en España? क्या आप एक नई लैंग्वेज सीखकर अपनी लाइफ में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं? Would you like to learn a new language that will introduce you to a new world of possibilities to improve your future? ¿Te gustaría aprender un nuevo idioma que te abrirá las puertas a un mundo de posibilidades para mejorar tu futuro? क्या आप स्पेनिश को प्रोफेशनल वे में सीखकर सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं? Do you want to get a Spanish level certificate? ¿Quieres conseguir un certificado de idioma en español? वेलकम टू ओला स्पेनिश क्लास लेवल A1। यह एक ऑनलाइन क्लास है जिसमें आप हिंदी से स्पेनिश सीख सकते हैं। हाय, मेरा नाम है अभिषेक शेखावत और मैं हूं जयपुर, इंडिया से। मैं पिछले 13 साल से स्पेन रह रहा था और मैंने ये डिसाइड किया इंडिया आने के बाद कि मुझे स्पेनिश लैंग्वेज हमारे इंडियंस को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज सीखने के बाद आपको लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। क्या आपको पता है कि 559 मिलियन पीपल स्पेनिश भाषा बोलते हैं? और अगर आप भी ये भाषा बोलना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा ये मेरा ऑनलाइन कोर्स, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी इंग्लिश से स्पेनिश में, क्योंकि आपको पता है स्पेनिश लैंग्वेज वर्ल्ड की सेकंड लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। तो मेरे साथ सीखिए हिंदी से स्पेनिश लैंग्वेज। और इस कोर्स की सबसे खास बात है वो है इस कोर्स में हमारा जो साथ दे रही हैं वो है लूसिया, जो कि एक स्पेनिश हैं और वो मेरे साथ इस कोर्स को आप लोगों को समझाएंगी और हम दोनों मिलकर आप लोगों को स्पेनिश सिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ लूसिया का। Hola, soy Lucía, encantada de conoceros. Soy de una ciudad llamada Bilbao, del norte de España, y una de mis pasiones es aprender nuevos idiomas y viajar. Ahora vivo en Jaipur y ayudaré a mi compañero Abhishek a enseñaros mi idioma, para que así tengáis la mejor preparación para vuestro certificado de idiomas. No solo el español es mi lengua materna, también he estado en vuestro lugar intentando aprender un nuevo idioma. Por eso daremos lo mejor de nosotros para prepararos para este examen. ¿Empezamos? What did I say? Hi, I'm Lucia, nice to meet you. I'm from a city called Bilbao from North Spain, and one of my passions is to learn new languages and travel abroad. And in this course, I will help my colleague Abhishek to teach you my language, so that way you are prepared for your Spanish level certificate. Not only is Spanish my mother tongue language, I've been in your place before, and I know how hard it is to start to learn a new language from the scratch. That's why we will try to do our best to teach you and prepare you for the DEL exams. Shall we start? हमें स्पेनिश क्यों सीखनी चाहिए? Why learn Spanish? ¿Por qué aprender español? Spanish is a global language. Open the doors to communicate with the 400 million Spanish speakers in the world. You will improve your employment opportunities. Become a more desirable employee and increase your job prospects. Open your world to other cultures. You can work or study abroad. Expand your entertainment options. Spanish immersion opportunities are everywhere. Spanish culture is rich in many areas. Enjoy movies, series, music and literature in Spanish. अब अगर यही बात मैं आपको देसी स्टाइल में समझाऊं तो हम लोग सिंपली आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये लैंग्वेज सीखते हैं तो आपकी लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी प्रोफेशनली। इस कोर्स में आप क्या सीखने वाले हैं? What are you going to learn? ¿Qué vas a aprender? इस कोर्स में हम लोग आपको बिल्कुल बेसिक स्पेनिश बताने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगी आपका A1 कोर्स कंप्लीट करने में। To start learning a new language, we have to start from the very beginning, the level A1. Para empezar a aprender un nuevo idioma, hay que empezar por el principio, el nivel A1. Where you learn enough to understand and use everyday expressions that are very frequently used anywhere in Spanish-speaking world, and to hold the most common conversations. Nivel donde aprenderéis lo suficiente para entender expresiones diarias utilizadas en el mundo hispano y a mantener conversaciones básicas. Simply हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि इस ऑनलाइन कोर्स में हम लोग 5 चैप्टर्स करेंगे। In this course you will learn the basic of the Spanish grammar and vocabulary in 5 chapters. En este curso aprenderéis los básicos del español en gramática y vocabulario en 5 capítulos. Chapter 1. My colleagues, my family, my friends. Capítulo 1. Mis compañeros, mi familia, mis amigos. Chapter 2. My schedules, my studies and my work. Capítulo 2. Mis horarios, mis estudios, mi trabajo. Chapter 3. My house, my neighborhood and my city. Capítulo 3. Mi hogar, mi barrio, mi ciudad. Chapter 4. My free time.
Capítulo 4, Mi tiempo libre. Chapter 5, Holidays, Travel and Geography. Capítulo 5, Las vacaciones, viajar y geografía. अब बात आती है कि इस कोर्स को हम कैसे करेंगे। तो ये जो बुक है जो कि यूनिवर्सिडad सर्वांतेस की है, लेवल A1, इस पूरी बुक को हमने हमारे इस कोर्स के थ्रू बहुत ही इजी वे में समझाया है, चैप्टर बाय चैप्टर। How we will learn it? We will follow the book The Keys to the New Del A1. So that by reading, listening and writing some exercises, you will be prepared to take the Del 1 certificate. वैसे तो आप ये ऑनलाइन कोर्स देखने के बाद रिपीट करेंगे, उसको सुनेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, आप खुद इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप इजीली कहीं पे किसी भी स्पेनिश से बात कर सकते हैं। बट क्या होता है, हमें हमेशा एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्सिडad सर्वांते एग्ज़ाम करवाती हैं, जिसमें ये जो कोर्स है ये A1 का है। Now we will see the parts of the level A1 exam. Ahora veremos las partes del examen de nivel A1. In the first part of the exam, the reading, you will have 45 minutes to complete 4 exercises that will test your ability to answer some questions after having read different text. En la primera parte, la lectura comprensiva, tendréis 45 minutos para completar 4 ejercicios, que medirán vuestra habilidad para responder algunas preguntas después de haber leído los textos. In the second part, the listening, you will have 25 minutes to complete 4 exercises that will test your capacity to answer some questions after having listened to different audios. En la segunda parte, en la escucha, tendréis 25 minutos para completar 4 ejercicios, que medirán vuestra capacidad para responder algunas preguntas después de haber escuchado los diferentes audios. In the third part, the writing, you will have 25 minutes to complete 2 exercises. In the first one, you will have to fill some blanks with personal information, and in the second one, you will have to write an email. En la tercera parte, la escritura, tendréis 25 minutos para completar 2 ejercicios. En el primero, tendréis que rellenar con información personal un formulario. En el segundo, tendréis que escribir un email. And finally, the speaking, the fourth part, where you will have 10 minutes to complete 3 exercises: a personal presentation, the explore of a topic, and a conversation with the interviewer. Finalmente, en la conversación, la cuarta parte, tendréis 10 minutos para completar 3 ejercicios: la presentación personal, el introducir un tema y la conversación con el entrevistador. In total, this is a 1 hour and 45 minutes exam divided in 4 different parts of 25 points out of 100 each. En total, es un examen de 1 hora y 45 minutos dividido en cuartas partes distintas, de 25 puntos de 100. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस कोर्स के बारे में। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, एंड बिलीव मी, ये लैंग्वेज सीखने के बाद आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे। Adiós.